हाय एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। ऑटिज्म पेरेंटिंग को आज मेरे लाइव सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है कोपिंग विद चैलेंजिंग बिहेवियर्स। हम कैसे अपने बच्चों के साथ कोप कर पाते हैं, रह पाते हैं उनके बिहेवियर्स के साथ। तो हर पेरेंट जिनका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है, उन्होंने कभी ना कभी मेल्टडाउन्स, एग्रेशन, क्राइंग, हिटिंग, और सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स या रिजिडिटी, ट्रांजिशन के वक्त प्रॉब्लम होना फेस किया होगा, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं, हर चैलेंजिंग बिहेवियर के पीछे एक मैसेज छुपा रहता है, राइट? कोई भी बिहेवियर बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना रीजन के होता ही नहीं। तो आज हम सीखेंगे उस मैसेज को समझना, ना सिर्फ रिएक्ट करना, बट समझ के रिस्पॉन्ड करना। तो इसका सबसे पहला पार्ट है कि समझिए बिहेवियर का रीजन। देखिए, हर बिहेवियर किसी ना किसी वजह से होता है। बच्चा नॉटी नहीं होता, कोई भी बच्चा बुरा बिहेव करना ही नहीं चाहता, राइट? वो तो हमें कम्युनिकेट करके बता रहा है, लेकिन हम और वो शब्द नहीं यूज कर रहा, तो हम उसको समझ ही नहीं पाते। और कुछ इनमें से कुछ रीजंस होते हैं कि क्यों बच्चे ऐसे कर रहे हैं। एक तो हमारे बच्चों में एक सेंसरी ओवरलोड बहुत हो जाती है, जैसे लाइट बहुत ज्यादा हो गई, साउंड ज्यादा हो गई, बहुत लोग हो गए, बहुत ज्यादा इनपुट आ गया, राइट? आवाज भी आ रही है, लोग भी हैं, विजुअल्स भी हैं, साउंड्स भी हैं, लाउड स्पीकर्स भी हैं, तो बहुत ज्यादा सेंसरी ओवरलोड। नाउ सेंसरी ओवरलोड हम किसको बोलते हैं? सेंसरी ओवरलोड का मतलब है बहुत सारा एनवायरनमेंट से इनपुट ब्रेन में जा रहा है। अब हमारे बच्चों की जो ब्रेन की वायरिंग है वो इतनी सही नहीं है, जिसके कारण इतना सारा इनपुट ब्रेन संभाल नहीं पा रहा, ठीक है? जिसको बोलते हैं कि ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा इतना सारा जो बच्चों को इनपुट मिल रहा है। अब हमारे बच्चों में कम्युनिकेशन डिफिकल्टी होती है जब वो अपनी बात नहीं कह पाते। अगेन वो बिहेवियर में आ जाते हैं, उनको समझ भी नहीं आता अपनी बात कैसे बताएं। कभी कभी कहीं बॉडी पार्ट में पेन है, डिस्कम्फर्ट है, वो भी नहीं बता पाते। कहीं गिर गए, कहीं चोट लगी, किसी ने पुश किया, किसी ने बुली किया, और हमारे बच्चे नहीं बता पाते, लेकिन इट कम्स आउट एज अ टैंट्रम और अ मेल्टडाउन। कभी कभी उन्होंने कोई, जैसे फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, स्टमक एक हो रहा है, या हेडेक हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, या फूड सेंसिटिविटी है, हमारे बच्चे हमें नहीं बता पा रहे और मेल्टडाउन हो रहा है, या वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, या वो देयर इज अ क्राइंग स्पेल, or they go on the floor and they don't know what to do, or they start jumping erratically, or sometimes they start laughing also. I've seen Ranak laugh many a times for no rhyme or reason, right? So, and our children also, they have a problem when हम उनकी रूटीन चेंज करते हैं, ठीक है ना? उनको, हमारे बच्चों को ना बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी अच्छी लगती है। प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? उन्हें पता होना चाहिए कि अगले क्षण, या जो मैं अब काम खत्म कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके बाद मुझे क्या करना है। तो उनको पता होना चाहिए कि क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट आई विल बी डूइंग। जब उन्हें कोई सरप्राइज मिलता है, वो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते हमारे बच्चे। हमारे बच्चों को अपने दिमाग में उनको एक पिक्चर बना के रखनी है कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि विजुअल स्केड्यूल जैसे ही होगा, बच्चे को पता है उसका दिन कैसा दिखने वाला है। अब उसकी एंजाइटी लेवल्स डाउन आ गई, आधी क्राइंग फिनिश हो गई, और जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, वो पूछ नहीं पा रहा था कि मम्मा आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, या अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसको ऑलरेडी अगर हमने अपने स्केड्यूल में दिखा दिया, तो वही उसका जो एंगर, जो एंजाइटी है, और एंजाइटी की वजह से जो एंगर है और एग्रेशन है, वही खत्म हो जाता है, ठीक है? तो हम प्रिडिक्टेबिलिटी में कन्वर्ट करके उनकी एंजाइटी को कम करने वाले हैं। उनमें से एक स्ट्रैटेजी ये होती है जिसमें हम अपने बच्चे की एंजाइटी को कम करने के लिए
हम प्रिडिक्टेबिलिटी कर देते हैं। और बिहेवियर में भी आप ये मत समझिए कि बच्चे को ऑलरेडी पता है कैसे बिहेव करना है। बच्चे को ऑलरेडी पता है कि उसको एक कोने में जाके चुपचाप होके बैठ जाना है बिना किसी काम के। आप ये बिल्कुल भी अज्यूम मत कीजिए द चाइल्ड नोज हाउ टू बिहेव, बट he or she is misbehaving on purpose. They never do it on purpose. They do not know how to behave because they do not know how to communicate. For them, behavior becomes a mode of communication. तो पहला स्टेप है, अगर हमने बिहेवियर के साथ कोप अप करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हम अपने बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे और जो भी बिहेवियर हो रहा है उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करेंगे। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों के ऊपर एक नजर रखें हमेशा, राइट। और ये शुरू शुरू की बात है जब हम अपने बच्चों को कोई भी एक आप टारगेट बिहेवियर ले लीजिए और उस बिहेवियर के बारे में आप सारी जितनी भी आप ऑब्जर्वेशन है वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप वो लिखना स्टार्ट कर दिया कि कैसा बिहेवियर है, क्या चीज ने ट्रिगर किया, क्यों हुआ, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है बच्चा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम ये डिकोडिंग करने लगते हैं कि बच्चे का क्यों बिहेवियर आ रहा है, राइट, तो क्या होता है कि जब हम रीजन समझते हैं तो हम क्या समझ रहे हैं, एक तो हम अपने बच्चों को समझ पा रहे हैं और अपने बच्चों को एम्पैथी मतलब उनका दर्द, हम दर्द बन सकते हैं, राइट। से अब क्योंकि अब हम दर्द बन गए, अब हमने उनकी कम्युनिकेशन, उनके कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिहेवियर जब हमने समझ लिया, राइट, तो नेचुरली अब उस बिहेवियर को संभालना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इजी हो जाता है, राइट। बिकॉज अब हमने समझ लिया कि ये बिहेवियर क्यों आ रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहा था मेरा बच्चा, और उसके हिसाब से मैंने अपना रिस्पॉन्स किया। ना कि मेरे को तो पता है कि उसको ऐसा नहीं करना, मैंने तो उसको 1000 बार बोला है कि चीखना नहीं है, दौड़ दौड़ के चले नहीं जाना है रोड पे, 1000 बार बोला है, फिर भी वो ऐसे ही करता है, राइट। तो ये जब वो बार बार रोड पे दौड़ के जा रहा है, उस टाइम उससे पहले, दौड़ने से पहले हुआ क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। वो क्यों भाग रहा है, उसकी हाइपर एक्टिविटी एकदम से कैसे बढ़ गई, कुछ तो उसने खाया है या कुछ ट्रिगर किया, किसी ने कुछ बोल दिया, राइट, और बच्चे को समझ में आ गया एंड द चाइल्ड वांटेड टू रन और द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। So we need to know why the particular behavior is happening, what triggered the particular behavior, what is the context behind the behavior, and that is also called antecedent। जब ट्रिगर हमें समझ में आने लगता है वो एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट मतलब ट्रिगर हुआ, बिहेवियर मतलब क्या बिहेवियर हुआ, चिल्लाने का हुआ, जंपिंग का हुआ, हाइपर एक्टिविटी का हुआ, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, सेल्फ हिटिंग हुआ, तो वो किस टाइप का बिहेवियर था, दैट इज व्हाट वी स्टार्ट डिफाइनिंग। देन पार्ट 2 इज जब बच्चा बिहेवियर में आ गया तो बहुत जरूरी है कि हम काम रहें, बिकॉज जो हम जैसे ही हम काम है, देखो हमारे हर इमोशंस का ना, एवरी थॉट, एवरी इमोशन, एवरी एवरी थॉट, एवरी इमोशन, एवरी फीलिंग की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी है, ठीक है। अब आप कौन से एनर्जी के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं? दिस इज अ स्मॉल लिटिल क्वेश्चन फॉर ऑल द पेरेंट्स। व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, what is the energy you are expecting from the other person? You are under stress, there has been something very difficult which you're not able to handle, now you are under stress. Would you like somebody to come and scream at you and even pull you down to a further ditch, or you want to see somebody calmly hearing you out? You want somebody to be calm so that you can open up. Same thing, our children are also waiting for the similar energy from our side. और ये जो ऊर्जा होती है ना हमारी थॉट्स, फीलिंग्स जो होती हैं, जो इमोशंस हैं, राइट, इसकी एक
अपनी वाइब होती है, एक एनर्जी होती है, और ये एनर्जी के लिए ना हमारे बच्चे कुछ हायर लेवल पे सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, वैसे भी उनकी सेंसिटिविटीज अलग ही होती है, राइट। और वो हमारे इमोशंस को बहुत जल्दी एकदम से ना एक स्पॉन्ज की तरह उसको अपने अंदर सोख लेते हैं। तो अब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मेरा बच्चा ने कंप्लीटली अपने ऊपर से आपा खो दिया, राइट। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मेल्टडाउन। अब वो बच्चा मेल्टडाउन में है, अब उसको तो जब वो मेल्टडाउन में है, वो रो रहा है और बहुत बुरी तरह से रो रहा है और वो जमीन पे लेट गया है, जब वो उस बिहेवियर में है, वो बच्चा भूल ही चुका है कि क्यों वो आया है, और वो आ तो गया, इस मेल्टडाउन में आ गया वो अपनी तरफ से, बिकॉज हमारे बच्चे अपने आप को इमोशनली रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो किसी भी इमोशंस के अंदर अगर चले जाते हैं तो बहुत डीपली चले जाते हैं, और फिर वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं। नाउ व्हेन दे हैव लॉस्ट द कंट्रोल ऑन देमसेल्व्स, दे इवन फॉरगेट द ट्रिगर, ठीक है। अब उस वक्त क्या एनर्जी होनी चाहिए उनके आसपास? एकदम काम, शांत, राइट, गिविंग देम अ हग, shifting them to a safer corner, or away from the trigger. Maybe the trigger is a loud sound. Maybe the trigger was some kind of fragrance they didn't like, right? Maybe it's a physical discomfort, right? So instead of losing control, instead of feeling embarrassed if you are outside, if you are in a mall or if you are in a restaurant, just don't bother about the world. The world is just going to pass by you, forget about you the next moment, right? So we are not supposed to think about what people will think about me or my child. My focus needs to be calmness and my child. बराबर है, राइट। ये तो हो गया जब मेल्टडाउन हमारे बच्चे का। तो जब बच्चा एंग्शियस है तो हमने उसका ऑपोजिट बिहेव करना है, राइट। वो एंग्शियस है, वो स्ट्रेस में है, तो हम उसको काम डाउन, और काम डाउन के लिए अगर हमने थोड़ा बहुत योगा सिखाया अपने बच्चे को, तो थोड़ा डीप ब्रीदिंग करवा लेना, काम टोन से बात करना, एक हक देना, राइट, और टाइट हक देना इफ दे लाइक द टाइटनेस, बिकॉज हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर अच्छा लगता है, और प्रेशर से वो काम फील करते हैं। हमारा टोन, कभी कभी उनको हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, उनको भाषा नहीं समझ आ रही, लेकिन हमारी टोन बहुत समझ में आती है, राइट। तो एक काम टोन में बात कीजिए, और थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा पानी पिलाइए बच्चे को, और उसको रेगुलेट करने में मदद कीजिए। द चाइल्ड रिक्वायर्स योर हेल्प फॉर इमोशनल रेगुलेशन। ऑल्सो काम पेरेंट, ये इक्वेशन याद कर लीजिए, काम पेरेंट इज इक्वल टू काम चाइल्ड, ठीक है। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज अ फिजिकल कंडीशन जो हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बच्चा तो बता नहीं पा रहा है, राइट। देन रूट कॉजेस पे जाइए, क्या खाया बच्चे ने, क्या पता डाइट की वजह से प्रॉब्लम थी, क्या पता पेट में मरोड़ उठ रहे हैं बच्चे को, दर्द हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है, या गैस हो रही है, या पेट साफ नहीं हुआ मॉर्निंग में क्लियर, पूरी तरह से। Even if the child pooped, but it did not get cleared, now it is causing bloating, now it is causing gas. और इस गैस से आपको पता है ना, माइग्रेन्स भी हो जाते हैं कभी कभी। एसिडिटी कैन बी द रीजन ऑफ और ट्रिगर टू माइग्रेन ऑल्सो, और हमारे बच्चे नहीं बता पाते, और कई बार दे आर ऑल्सो डूइंग वॉमिट्स। सो कीप दिस इन माइंड कि वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट में है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा वॉमिट्स कर रहा है, या उसको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो उसका रूट कॉज है उसमें, उसके गट में बहुत इश्यूज हैं। सारी बीमारियां कहां से शुरू होती है जी? गट से शुरू होती है। गट का क्या मतलब होता है? मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन होता है, वेयर द एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैपन एंड द फीकल मैटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कोलोन, उसको गट बोलते हैं। बट फॉर आवर रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म, we will say everything: the stomach, the small intestines, and the large intestines. So the main digestion happens in the stomach, the small large intestines for the absorption, assimilation, and even the absorption of the water, right?
all these things, this becomes the gut for our children. Now, all the diseases, interestingly, start from the gut, because gut is the biggest brain of it's like a second brain, but it's also the biggest part. When you compare with the real brain, the brain that we are talking of, gut is bigger than our brain. Gut has more nerve endings than the brain alone, right? So this part is the one, if we keep the gut health proper, we will not be facing any of the issues when it comes to allergies, when it comes to mental health, when it comes to skin, hair, everything is taken care by the gut. And the gut is also the house for the immune cells. ठीक है? अब जब बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब रह रही है और वो फ्रीक्वेंटली वो बीमार पड़ रहा है, फूड सेंसिटिविटीज है, कुछ खाना खाते ही वो वॉमिट कर रहा है या उसको ब्लोटिंग हो रही है, it only proves that there is food intolerances, there is food sensitivities for our children, right? तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज ही यही है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, गट और डाइट। रनक का हमने बहुत सारा बिहेवियर मैनेज भी किया, बट क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली उसका गट क्लीन अप कर रही थी, सिर्फ क्लीन अप ही नहीं करना था मुझे, तो गट लाइनिंग ही उसकी इतनी खराब थी कि कुछ डाइजेस्ट ही नहीं होता था, खाना अनडाइजेस्टेड पूरे पाइप से निकल के गुजर के आ जाता था बाहर, राइट? तो आई फ्रॉम व्हेन ही वाज प्रीटी यंग आई स्टार्टेड doing gut cleansing, detoxing, gut healing. The main thing was gut healing for me, क्योंकि absorption of nutrients नहीं हो रहा था, right? अब जब बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं 100%, 200%, the child will show symptoms which come out as behaviors because they are not able to speak. They are not, even if the child is verbal, the child cannot exactly label what they are internally feeling. Is that true? Yes, it is true, right? Many a times challenging behaviors are not behavior. They are biological. ठीक है ना? होता ये internally है. जंक फूड, शुगर, ग्लूटेन, कैसीन, ये सब प्रोटीन्स होते हैं जो व्हीट और दूध में पाए जाते हैं और दूध के प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। ये गट में सूजन पैदा करते हैं, और जब गट खुश नहीं है, जब हम हेल्दी नहीं है, तो क्या हम कभी खुश रह सकते हैं? नहीं, हम बार बार रोते हैं। सो द चाइल्ड लाइक रनक यूज्ड टू गेट एपिसोड्स ऑफ क्राइंग। रात में जाग जाग के रोता था, सुबह उठता ही रोते हुए था, जिसमें मुझे 1 घंटा लगता था उसको ठीक करने में। 1 hour I will try to pacify my son who is just a toddler. It used to take me 1 hour of taking him around and holding him tight and offering him various things to bring down his crying. So only a healthy body leads to happiness outside, right? So behavior भी उससे connected है, हमारे gut के साथ connected है। If the child is happy, the child is not going to show you crying, screaming, frustration, anger, stress. Can it come? Can a happy person, if you are smiling right now, can you just start becoming angry with somebody? Because you are happy now. Everything is tolerable, isn't it? So this is what I discuss. This is the main intervention that I did for Rana, which has changed his life. And naturally, parents are so very connected with the children, right? And that brings what? Peace to my life, peace to his life. He's a happy child. And happy child, when you have a happy child at home, then there is nobody who can stop their learning. They're transitioning from dependency to independency, isn't it? It becomes easy.
He's able to understand, comprehend what we are talking, right? When I give him instructions, he do not forget. He remembers. I'll give you a small example. He's going to be 17 this month, and he was not independent while using the lift. And it's not that he doesn't know how to press the button, but he loves lift from the childhood so much that in his childhood it was an obsession to be on the lift. Rather, we started avoiding malls or places where there used to be lift, because our child would come into a meltdown because he wants to be on the lift, he doesn't want to come out of the lift, and we used to just avoid the lift. Now that craze has finished. It's not that he's there is no meltdown happening. But when we are training him for using the lift, what he used to do was the his cab driver would put him in one of the lifts, and we would go out and receive him at our floor level. ठीक है, उसको लेने के लिए हम बाहर जाएंगे और हमें पता है वो कौन सी वाली लिफ्ट में है और वो वहां से बाहर आ जाएगा. लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी स्टिल ऑन इन द लिफ्ट. ही वुड चेंज द लिफ्ट्स and go to different floors and keep enjoying, while we would be looking for him at our floor and the cab driver on the ground floor where he went and which lift he is. In fact, we have 3 lifts working together, and that was a problem. So this continued, and I was getting this a frequent complaint, and I'm not there. My husband is working from home, so he used to receive him. One day I sat with Ranak and I told him, Beta, I don't want to receive any more complaints of you, right? If you really want to play with the lift, you can come back to the floor that you are expected to. Tell Papa I want to still play. Okay, otherwise, we are all looking for Ranak and we don't want to lose you. He said, okay, Mama. I thought he just said it for the sake of it. So these days, whenever we are telling him or making him understand anything, he will say, okay, Mama, or he says, Mama, I got it. He says, or understood. He says this kind of words to me once, we are sitting with him. That day was the first and the last day. I didn't have to tell him anything anymore. Right? Now he comes aram se on our floor without changing the lifts and moving up and down and enjoying. All those things finished. And all this thing has happened over it has taken a lot and lots of patience, lots and lots of consistency, lots and lots of consistency, lots of time together, and also healing him from within. So all those things that I adopted to bring healing to Ranak from within, especially the diet, the detox, the nutrition, what goes missing in for our children, what what are things that are missing, we start putting that in their body, and whatever is the damages or the inflammation in their gut, we start working there. Once we start doing that, okay, then we start seeing the improvement. Once we start seeing the improvement, and the improvement can happen anywhere in any of the fields. It can be improvement in the fine motor skills, it can be improvement in the speech, it can be improvement in the focus or the eye contact, or or their turn taking ability, or their waiting, or their capability of getting bored, not doing any activity, standing quietly with the stroller, that cart, with no behavior in the mall. It's taken us a while, but it was worth it. Let me tell you, it's worth it. And it's like you change the food into medicine, and the medicine is your food. The food is the healing component here. And that's what I'm here to share with all of you. I also, being a mother,
And if I feel that if I could do, then anybody can do. I'm also one of you who also has so many fears, who also went through a lot of challenges, and we have reached here today. And because I have reached where I am, actually, I want to pull you there in the zone where I am, right? And what all things you need to come to where I am, the space we both are, you know, whatever it takes for that. I have made it very easy in my 14 days program, right? Also, if you want to get more details, Saturday I'll be conducting my masterclass. You can join my WhatsApp group where the link is shared, and you can join my WhatsApp group and keep getting all the updates when all we have our masterclass, when we are starting our 14-day program. Join me. Believe you me, I will empower you to an extent that there's no looking back. And I've made things so simple, which for me at that point in time was very difficult. I did a lot of trials and errors, and and trial and error requires time, patience, still, and then you are again and again trying new things. What really worked, what truly worked, is something that comes in that forum. You know, it's not a theory; it's practically implemented, got results, and it's not only for my son. Many thousands of kids do fantastic on this, on the diet, nutrition, and detox. These things can bring huge amount of improvements, even in the kids who are facing genetic mutations, even in the kids who might be on the side of getting seizures as well. That also is taken care of. Seizure is nothing but toxic overload in the brain. That's it. So we just have to need to detox. That also is taken care. So come join, and I will be happy to see you on the other side. But for today, that's all from me. Uh, Keep joining me in, and I do keep talking to all the parents with the hot topics, the topics I feel, I had faced a challenge, and it's better to talk to you. It's better to share it with the parents around me, because I might have walked a little two steps ahead of you, right? And or I would have tried something which was little different than what you have been doing or you have already tried, right? Because I am still seeing a lots and lots of improvement in my life, right? So that's the reason why I'm here. And so for today, let's call it a day. Love you all. See you again very soon, maybe tomorrow, maybe day after. But yes, definitely, I'll keep coming, and I love to talk to all the parents and give them directions. These directions in my time were really scanty, hardly there. But so I want to make this information public so that uh, you know it becomes easy for you to take action, right? Make your life little easier if I can. So bye bye. Have a lovely evening ahead, and keep working with your child. Never give up. Okay. Bye bye. See you.